হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আজকে আমরা স্টার্ট করবো ইনভার্স ইকোনমিক্স স্টার্ট করবো। In trigonometric equation, suppose if it is given if sine of x this is equal to half, then the output if this is sine of x equal to half, if this equation is given, x corresponds to the angle, right? So we will say x equal to pi by 6, pi by 6, and so on. There are infinite number of values of x. So sin x equal to half যদি আমি বলি তার মানে আমরা infinite number of solutions পাচ্ছি। যেমন ইনভার্স ইকোনমিক্সে আমরা কি করি, ডেফিনেটলি ইট ইজ ইনভার্স। তোরা ফাংশন জানিস একটু? Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, অল্প একটু জানি। অল্প জানলে পারেই হবে, ঠিক ডোমেন আর আছে রেঞ্জটা জানি, মানে ডোমেন আর রেঞ্জটা কি করে বার করতে হয় ওইটুকুই জানি। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ফাইন। সো চেক if we draw the graph of sin x, এরকম টাইপের কিছু একটা আসবে, তাই তো? So sin x equal to half means we'll get infinite number of, that means if we take y equal to half line and if we take the points of intersection of y equal to half and sin x, we'll get infinite number of points of intersection, তাই তো? আমি infinite number of points of intersection পাবো। So inverse function কি বলছে? Inverse function বলছে আমরা এরকম ভাবে লিখি y equal to sin inverse of x, that means in this case this x will be some number and this corresponding y means this input will be some number which lies between -1 to 1, and this y will represent some angle. So আমি যদি এখানে যদি sin inverse of half বলি, that means we have to find that angle for which sin x equal to half. Okay, we have to find that angle for which sin x equal to half. Now check, as I said, there exists infinite number of angles for which sin x equal to half. Now in inverse function what happen, we restrict the domain. Okay, আমরা ডোমেনটাকে রেস্ট্রিক্ট করি। তো ডোমেনটাকে রেস্ট্রিক্ট করে এরকম ভাবে নিয়ে যায় যে for every input we will get only one output, not more than one output. Okay, এখানে আমি বলি sin inverse x equal to half. In this case we have pi by 6, we have 5 pi by 6, again we have 2 pi plus pi by 6, 3 pi minus pi by 6, and so on, infinite number of angles, but we want only one angle. Okay, for one input we will get only one output. Input যদি একটা হয় output আমি একটাই চাইছি, এটাই আমার inverse function. So that means if we take any number lies between -1 to 1, we will get only one output. Like that way we have to restrict the domain. Now check, if we take domain from -pi by 2 to pi by 2, all values of sin x will be covered, -1 to 1, তাই না? সব ভ্যালু কভার হবে তো? হ্যাঁ স্যার। Yes, sin x sir. এর ভ্যালু -1 to 1 এর মধ্যে সবাই কভার করবে, and for every value we will get only unique angle. For every value lies between -1 to 1 we will get unique angle. আমি একটার বেশি অ্যাঙ্গেল পাবো? আমি sin inverse x যদি half বলি, then for this corresponding value of half we will get the angle as pi by 6. There is no other angle for which sin x equal to half. Okay, so আমরা কি করব, রেস্ট্রিক্ট করে দেব ডোমেনটাকে। So similarly we can restrict the domain from pi by 2 to 3 pi by 2 আছে। তো যদি ইচ্ছা হয় তুই এটা pi by 2 আছে, this is 3 pi by 2, তুই pi by 2 থেকে 3 pi by 2 এর মধ্যে ডোমেনটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারিস। In this domain also will get every value only once. For all values of x, any value just choose any value of x, and for every value will get unique angle. Okay, তাহলে আমি এরকম একটা ডোমেন চুজ করব। কিরকম ভাবে ডোমেনটাকে চুজ করতে হবে? We have to choose a domain such that all values of sin x should be covered. That means -1 to 1. Okay, -1 to 1, all values should be covered, and all values should be covered only by one angle, not more than one angle. Clear? Yes sir. Yes, sir. So for sin x আমরা কি দেখছি? For sin x, if we take -pi to pi by 2, all values will be covered, and they will be covered only once. আমি আবার বলছি যে আমরা যদি চাই we can define, so generally we define inverse function. The standard definition of inverse function for sin x, when it is restricted domain, we take the domain, sorry, not domain, in case of inverse function it will be range will be -pi by 2 to pi by 2. We can define inverse sin inverse x from pi by 2 to 3 pi by 2 also. We can define sin inverse x from 3 pi by 2 to 5 pi by 2 also. Okay, we can define if we want, but the standard definition we take -pi by 2 to pi by 2 only. আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনিশনটা আমরা ইউজ করি সব জায়গায় যেটা ইউজ হয় সেটা -pi by 2 থেকে pi by 2 ইউজ হবে, বাট আমরা যদি চাই আমরা ডিফাইন করতে পারি, ইট ইজ ডিফাইন্ড। ওকে, তো জেনারেলি দেখ সিমিলারলি তাহলে cos ইনভার্স আমি যদি sin ইনভার্সের জন্য বলছি, আমি sin ইনভার্সের জন্য আমি এখান থেকে for sin inverse of x we are defining this is pi by 2, এরকম আমি যদি করি sin inverse is defined from -pi by 2, this is x equal to pi by -pi by 2, this is x equal to pi by 2. Okay, for sin inverse we restrict the domain for sin from -pi by 2 to pi by 2. For cos inverse এর জন্য আমাকে কি করতে হবে? 0 থেকে pi. 0 থেকে pi। দেখ cos inverse, for cos inverse আমরা এরকম ভাবে নিই, ঠিক আছে? cos a graph of cos is like this. So if we take -pi, this is -pi by 2, this is pi by 2, this is pi. If we take this, if we take -pi by 2 to pi by 2 for cos, all values -1 to 1 will not cover.
Okay, it will cover only 0 to 1. Okay, and similarly the values are also not unique, because say suppose if I take half, we will get minus pi by 3 as well as pi by 3. So in case of cos inverse, when we are defining cos inverse, we have to take 0 to pi, because if we take 0 to pi, all values of cos will be covered and uniquely all value will come only once. Similarly, we can define cos inverse from pi to 2 pi, 2 pi to 3 pi, and so on. But generally, when we define inverse function, inverse trigonometric function, first what we check whether we are getting any symmetric interval with respect to origin or not. Okay, if we get any symmetric continuous interval with respect to origin, then we will take that interval only. If we do not get any symmetric interval with respect to origin, then take the first positive interval. Okay, So cos এর ক্ষেত্রে অরিজিনের রেসপেক্টে সিমেট্রিক ইন্টারভ্যাল কিভাবে কেন কি cos এর ক্ষেত্রে অরিজিনাল সিমেট্রিক ইন্টারভ্যাল তো আমরা ডিফাইন করতে পারবো না। If we take minus pi to pi by 2, so all values will not be covered. So it will cover only from 0 to 1, not from minus 1 to 1. Na? হ্যাঁ আচ্ছা আপনি স্যার sin x এর জন্য বললেন sin ইনভার্স এর জন্য কি স্যার Sin inverse x to minus pi by 2 to pi by 2. না স্যার অরিজিনাল রেসপেক্টে সিমেট্রিক ইন্টারভ্যাল হতে হ্যাঁ সেটাই বলছি যে এগুলো হচ্ছে আমার প্রায়োরিটি, not necessary. Okay, আচ্ছা স্যার this is not any rule, this is only for calculation purpose. The inverse trigonometric function is defined only for calculation purpose. This way it is defined. Why? Only for calculation purpose, because if there exists some symmetric interval, definitely calculation will be easier. হ্যাঁ Okay, with respect to origin, the calculation will be always easier. So that is the reason. As I told, we can define sin inverse x from pi by 3 pi by 2 also. Okay. Okay. So for cos inverse, we are not getting any symmetric interval with respect to origin. That's why for cos inverse, we will define from 0 to pi, first positive interval. For tan inverse, definitely we will get symmetric interval. So first write down domain and range of inverse function. Okay. Domain and range of inverse function. First write down functions, next domain. Domain means x and this is range. Range means y. So first is y equal to sin inverse of x. Sin inverse of x, that means we have to x will be those values which sin will cover. Sin kon value cover kare? Sin will cover all the values from minus 1 to 1. That means in this case domain will be minus 1 to 1. This will be the domain. And range আমি কি নেব? We have to take first, we need to check whether there exists any continuous symmetric interval or not. Yes, there exists continuous symmetric interval. So sin inverse is defined from minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so if I write sin inverse of minus 1 by 2, it will be minus pi by 3, minus pi by 6. If I write sin inverse of root 3 by 2, it will be only pi by 3, not 2 pi by 3. We have to take that angle only which lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2. For y equal to cos inverse of x, what will be the domain of cos inverse? That's like same as sin. minus 1 to 1. Minus 1 to 1. This will be the domain. And what will be the range? Range will be 0 to 0 to pi. 5. For y equal to tan inverse of x, if we take y equal to tan inverse of x domain, that means the values which tan will take. Minus infinity to Minus infinity to infinity or r, right? Minus infinity to infinity or r. What is the range? minus open interval minus pi by 2 comma open interval pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2. Y equal to cot inverse of x. Same as domain will be same as tan inverse. It will be minus infinity to infinity or r. This will be 0 to pi. Check in case of cot inverse. In case of cot inverse, check in case of cot inverse, we can get symmetric interval with respect to origin. Okay, it is possible, but in that interval, cot is not continuous. Okay, in that interval, suppose if we take minus pi by 2 to pi by 2, definitely cot will take all the values from minus infinity to infinity. In this case, we are getting symmetric interval, but in this interval, cot is not continuous. Next, y equal to স্যার cot is not continuous মানে sec inverse. Cot 0 the continuous হয়? দেখ, graph of cot কিরকম হয়? At pi by 2, what is the value of cot? In this point is pi by 2. 0, na? 0. So it will be something like this. At minus pi by 2, it is 0. The graph of cot will be like this, na? Yes, So sir. definitely at 0 it is not continuous. That's why. This is the reason, nothing else. আচ্ছা For sec inverse, can you tell me the domain? Sir, minus infinity से minus 1 to infinity से 1 to 50. And
for this, for sec inverse, the range will be just like cos inverse. So it will be 0 to pi, except pi by 2, because there will be a point where it will be undefined. Sec pi by 2 is undefined. Awesome. Next is y equal to cosec inverse of x, same minus infinity to minus 1, union 1 comma infinity, and the range will be minus pi by 2 to pi by 2, Pi by 2 except 0. except 0. Okay, these are the range and domain. According to me, inverse function is most confusing chapter throughout 11 and 12. So if there is any doubt, please ask. So इतना confusing क्यों थी chapter? पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है कि ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके बाद देखो जब करना देखोगे, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को नहीं भी लग सकता है, बट आई थिंक इट इज मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर। স্যার হুম স্যার কন্টিনিউয়াস মানে কি? কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে তুই একটা সাপোজ গ্রাফকে ড্র করছিস উইদাউট পেনটাকে উঠিয়ে, ইফ देयर इज নো গ্যাপ বেসিক্যালি, সাপোজ আমি এরকম করছি, দিস ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস, কারণ এই পয়েন্টে আমার গ্রাফটা ফাঁকা হয়ে গেল, দিস ইজ ডিসকন্টিনিউয়াস। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার Okay. বুঝেছি। মানে কোনো গ্যাপ থাকবে না বেসিক্যালি, হ্যাঁ দেয়ার উইল বি নো গ্যাপ এট এনি পয়েন্ট, দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস। ওকে স্যার। Never any graph. Next item, graphs of inverse function. স্যার একবার আগের পেজটা যাবেন, একটুখানি মিস হয়ে গেছে লেখা। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। So first, how to draw the graph of inverse function? Okay, let y equal to f of x is a function, and we have to draw y equal to f inverse of x. First কি করব? First draw y equal to f of x. Okay, second, then take image of y equal to f of x with respect to the line y equal to x. Okay, so first what we have to do, we have to draw the graph of y equal to f of x, and then we have to take the reflection of that graph with respect to the line y equal to x. Okay, we have to take the image of that graph, and the image will represent the graph of y equal to f inverse of x. Okay, first draw the graph of y equal to f of x, then draw the line y equal to x, and then take the reflection of that graph with respect to the line. That image will represent the graph of f inverse x. Done? হ্যাঁ স্যার। हाँ sir. So first y equal to sine inverse of x. So to draw Sir, the एक बार graph of, पिछले पेज में लिख के चलिए सर, मैं लिखना चाहता हूँ. हो गया ना? हाँ सर. देखो, so पहले तुम्हें क्या करना है, y equal to sin inverse of x का ग्राफ ड्रॉ करना है. So first what we have to do, we have to draw the graph of sin x. अब sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है, पर कहां से कहां तक ड्रॉ करना है sin x का ग्राफ? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय Minus pi by 2. माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 থেকে পাই বাই 2 মাঝে ড্র করব। ওকে, this is y equal to x line. Now graph of sin x, it will be like this. It will be the graph of sin x. Okay, so what is this point? पाई बाय 2 Yes, this point will be pi by 2 comma 1. So this is x equal to 1 point, sorry, pi by 2 point, and similarly this point will be minus pi by 2 comma minus 1. Okay, this point will be minus pi by 2 comma minus 1. So this is the graph, this blue one is the graph of sin x.
y equal to sine x. Now we have to draw the graph of sine inverse. So to draw the graph of sine inverse, what we have to do? We have to take the reflection of this graph with respect to this line. समझे the line with respect to reflection কি আসবে? This point, what will be the reflection of pi by 2 comma 1 with respect to the line y equal to x? 1 comma pi by 2. 1 comma pi by 2. Good. So this will be 1 comma pi by 2 will be somewhere here. So it will be like this. And similarly this line. This. So this black graph is the graph of sine inverse x. This point is 1 comma pi by 2. That means this point is x equal to 1. This point is x equal to 1. Similarly, this point will be x equal to minus 1. This point will be minus 1 comma minus pi by 2. देखो ठीक है सही है हाँ सर স্যার এখানে কি শুধু -π/2 থেকে π/2 এর জন্য অপশন আছে? কেন আমি ডিফাইন সাইন ইনভার্স ডিফাইন করার জন্য করা হয়েছিল কোন ডোমেনের জন্য সাইনের কোন ডোমেনের জন্য ডিফাইন করেছিলাম -π/2 to π/2 সো উই হ্যাভ টু ড্র দ্যাট পোরশন অনলি ওকে হ্যাঁ এখানে আমি ইনভার্স ডিফাইন করেছি ওর মধ্যে হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার আমরা যেরকম ডিফাইন করব ডোমেনটা আর রেঞ্জটা সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে আমার গ্রাফের এক্সটেন্টটা কত দূর হবে। এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে डन ओके अब देखो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x ठीक है सो फॉर cos इनवर्स in which interval we have to draw the graph of cos inverse 0 π 0 to pi good we have to draw 0 to pi আচ্ছা লাইনটা ড্র করে নিই this one na? This is the graph of cos x from 0 to pi this is x equal to pi so this point will be pi comma minus 1 okay so what will be the coordinates of this point it will be pi by 2 comma 0 this point is 0 comma 1 so this is the graph of y equal to cos x now to draw the graph of cos inverse x पहले ये बोलो कि ये 0 1 का रिफ्लेक्शन कहां पे होगा 1,0 1,0 तो ये जो ग्राफ है ये पार्ट दिस पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट विल बी लाइक दिस है ना यस सर ये आ जाएगा है ना एंड ये पार्ट दिस इज पाई बाय 2 0 सो ये पार्ट का रिफ्लेक्शन आ जाएगा 0 पाई बाय 2 दैट मींस इस टाइप का कुछ जाएगा ओके एंड व्हाट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट pi comma minus 1 so it will be minus 1 comma pi so এটা এরকম এখানে so this is the point this will be the point minus 1 comma pi this will be the point 0 comma pi by 2 this will be the point 1 comma 0 this is the point pi by 2 comma 0 so this blue one will be y equal to cos inverse of x देखो ये रिफ्लेक्शन सही है हाँ सर should I go to the next page Just a minute, sir. এক মিনিট হ্যাঁ স্যার next y equal to tan inverse of x so first draw the graph of tan x in the interval minus pi by 2 to pi by 2 okay so this is pi by 2 this line is pi by 2 x equal to pi by 2 this line is x equal to minus pi by 2
This is y equal to x line. This is x equal to pi by 2. This is x equal to pi by 2. This is x equal to minus pi by 2. So first draw the graph of tan x. So this will be the graph of tan x. Now, so this is y equal to tan x. Achha, now tell me, if x equal to pi by 2 is, this is asymptote. If x equal to pi by 2 is asymptote of tan inverse x, sorry, tan x, what will be the asymptotes for tan inverse x? बोलो, x equal to pi by 2 अगर tan Y equal to x pi का by 2. asymptotes है, तो tan inverse x का asymptotes क्या होगा? Y equal to pi by 2. y equal to pi by 2, y equal to pi by 2 and y equal to Minus minus pi by 2. तो देखो, ये asymptote जो होगा, that means ये asymptote होगा इस टाइप का. There will be the asymptotes. One will be y equal to pi by 2 and there will be y equal to minus pi by 2. So this is one asymptote, y equal to pi by 2, and this will be another asymptote, y equal to minus pi by 2. Okay, so this is y equal to pi by 2. This is y equal to minus pi by 2. अब देखो ये portion, ये जो part है, this branch, ये portion of the graph, this portion of the graph is approaching towards x equal to pi by 2. तो इसका जो reflection होगा, वो reflection किसकी तरफ approach करेगा? The reflection of this part will approach towards y equal to pi by 2. इसका reflection जो इस टाइप पे कुछ होगा. Okay. Similarly, this portion of the graph is approaching towards x equal to minus pi by 2. So reflection of this portion will approach towards y equal to minus pi by 2. So इस टाइप पे कुछ. देखो ठीक है. So this is the black one is the graph of tan inverse of x. Sir, we are just simply interchanging x-axis and y-axis. Yes. Is it clear for everyone? Anyone having doubt, please ask. नहीं सर. Yes, sir. Okay. अच्छा, try for cot inverse. एक बार try करो तो cot inverse. Okay, so this is the graph now. Y equal to cot x. This red one is the graph of y equal to cot x in the interval 0, pi. Now check x equal to pi by 2 is the asymptote of cot x. So for cot inverse x, y equal to pi by 2 will be the asymptote. देखो. Now check this branch. Say suppose this is the point of intersection. Above this line, this portion of the graph is approaching towards y-axis. Y-axis means x equal to 0. So if this portion is approaching towards x equal to 0, reflection of this part will approach towards
y equal to 0 Y तो equal ये to पोर्शन का जो रिफ्लेक्शन है इट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना? सो दिस विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस, ये वाला पोर्शन दिस पॉइंट इज 0, pi by 2, 0, so reflection of this will be 0, pi by 2, and this portion below x axis, this portion of the graph is approaching towards x equal to pi, so reflection of this will be, this will approach towards y equal to pi. y equal to pi. It will be something, so this will be the graph of y equal to cot inverse of x, this is y equal to pi. सर जरा इस ग्राफ को जरा एक बार फिर से बता दीजिए मैंने। हाँ बोला बोला। सर जरा ग्राफ को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं नेट पे चला लेता हूं। ये कॉट का ग्राफ, ये रेड वाला जो ग्राफ है ना, दिस रेड ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ कॉट का ग्राफ क्लियर है? हां सर। अब तुम पहले देखो ये वाला पोर्शन x y इक्वल टू x लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, सो ये वाला पोर्शन इफ कौन से लाइन की तरफ अप्रोच हो रहा है? इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स y एक्सिस, दैट मींस x इक्वल टू 0 है ना, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 और y एक्सिस, सो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विल अप्रोच टुवर्ड्स x एक्सिस, तो ये पार्ट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो ये वाला होगा। हां सर। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन, दिस पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? दिस पॉइंट इज pi by 2, 0, तो ये पॉइंट कहां पे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा? यहाँ पे, सो दिस पॉइंट विल बी 0, pi by 2. Now this portion which is below x axis, तो ये अगर below x axis है and this graph is approaching towards x equal to pi, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां पे जाएगा? y equal to pi की तरफ जाएगा। हां सर। सही है अभी? हां सर। ठीक है। স্যার রিফ্লেকশনটা হওয়ার পরে মানে ইনভার্সের গ্রাফটা কোনটাতে মানে কোনটার অ্যালং অ্যাসিম্পটোট হবে ওইটা দেখার জন্য মানে ফার্স্ট স্টেপ খালি এক্স ওয়াইটা উল্টে দিলেই তো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বেসিক্যালি ইনভার্স মানে কি দেখ, আমরা যখন এরকম লিখি y equal to sin x, তো বেসিক্যালি x equal to sin inverse of y, এটাই তো লিখি না? হ্যাঁ। So basically what we are doing in inverse function, we are interchanging between x and y. বাই। सर जरा पहले कॉस वाला दिखा दीजिए, कॉस वाला। cos, हां सर कॉस, मैंने कुछ लगा रखा है। cos कहां पे है cos? हां सर समझ में आ गया। हां सर। ओके, दैट टू ग्राफ्स ट्राई करो, टू ग्राफ, ये ग्राफ एक बार ट्राई करना, एक है सेक इनवर्स x और एक है कोसेक इनवर्स x, ठीक है? मैं दूसरा प्रॉपर्टी कराता हूं, देखो, sin inverse x, this is equal to x for all x belongs to -1, 1. Cos inverse of x, this is equal to x for all x belongs to -1, 1. Tan inverse x, this is equal to x for all x belongs to R. Cot inverse of x, this is equal to x for all x belongs to R. Sec inverse x, this is equal to x for all x belongs to R minus R minus 1. ताकि लॉजिकल कर दो। नो, ये इंक्लूड हो गया ना एक्चुअली, अगर यहाँ ओपन किया तो ही इंक्लूड हुआ है ना। हां सर। Cosec inverse of x, this is equal to x for all x belongs to same R minus -1, 1. So whenever actually they are defined, if inverse function is inside and trigonometric is outside, then input and output are same. Okay? हां सर। So if inverse is inside, whenever it is defined, whenever it will be defined, the input and output will be same. Can you draw the graph of sin inverse sin x? अगर तुम्हें ये पूछा जाता है कि sin inverse sin x का ग्राफ ड्रॉ करो, कर पाओगे? Yes sir, y to x equal. y plus हाँ, sin inverse of x. So this is equal to x, but कहाँ पे? x belongs to -1, 1. तो ये जो ग्राफ होगा वो इतना ही होगा, है ना? हां सर। इतना ही होगा बस. This will be -1. This will be, sorry, yeah, this will be 1. sir, can you go to the previous page? I was writing. सर tan inverse Tan inverse and cot inverse will be the whole line, and sec inverse and cosec inverse will be 2 ray. Actually, sin inverse and cos inverse are the segment. Tan inverse, cot inverse, they are line, and sec inverse, cosec inverse, they are rays. Achha, can you tell me the difference between segment, ray and line? So segment have both. Sir, segment is both present. Line have no present. line is Three has a one and line has both. Actually, simply we can say for segment there will be starting point, there will be end point. That means there will be 2 endpoints we can see. For ray there will be only 1 endpoint. Okay, that means there will be the starting point. There will be no endpoint. For segment there will be starting point as well as endpoint. For ray there will be no there will be only starting point but no endpoint. And for line there is no starting, no endpoint. So anyway, this is y equal to sin. तो sec of sec inverse x और cosec of cosec inverse सेकंड থেকে স্টার্ট হবে, এটা সেকেন্ড থেকে ওপেন হবে দেখতে, মানে 1 থেকে স্টার্ট হবে যেটা। No, open হবে, close হবে. স্যার দেখবেন cosec inverse cosec Next দেখা যেটা. ঠিক আছে।
This is defined for x belongs to minus infinity to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. So it will be like this and this. আচ্ছা ক্লোজ তো বলতে হবে 1 মাইনাস 1 তো ইনক্লুডেড Included. This is 1, this is minus 1. Acha. Done? Next property. Sine inverse of sine x, this is equal to x for x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Cos inverse of cos x for x belongs to 0 comma pi. Tan inverse of tan x, this is equal to x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Cot inverse of cot x, this is equal to x for x belongs to 0 to pi. Sec inverse of sec x, this is equal to x belongs to 0 to pi except pi by 2. Cosec inverse of cosec x, this is equal to x for x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 except 0. Okay. Tell me this from sine inverse sine x defined for which x? If I write y equal to sine inverse of sine x, this is defined for which x? बोलो कौन सा x के लिए defined है? कौन सा minus pi by 2 to pi by 2. No, it will define for all x. It will define for all x. If I write, suppose আমি এরকম লিখি কি y equal to sine inverse of sine 2 pi by 3, isn't it defined? Because this is sine inverse of sine 2 pi by 3. 2 pi by 3 means what? Sine inverse of 3 by 2. So this is equal to pi by 3. So definitely it is defined. But in that case, input and output are not same. So input and output are same only when they are in the domain. Or we can say the range of sine inverse. Range of sine inverse is minus pi by 2 to pi by 2. So if x belongs to the range of sine inverse, then only input and output are same. Otherwise, it will not same. তার মানে আমরা যখন এই y ইকুয়াল টু sin ইনভার্স sin x টা লিখছি ইকুয়েশনটা ভ্যালিড ফর অল x কিন্তু Valid ইকুয়াল for টু all x লিখতে গেলে ওটাকে তখন pi minus pi by 2 থেকে pi by 2 এর রেঞ্জের মধ্যে ফেলতে হবে সেটাও কনভার্ট Exactly. And that is the main aim of inverse function. এটা যদি বুঝে যায় সবকিছু বুঝে যাবে। ঠিক আছে Okay. Sine inverse of sine this is equal to x only when x belongs to minus pi by 2 pi by 2. That is when it belongs to the range of sine inverse. Similarly for cos also, tan also. Okay. So if inverse function is outside and trigonometric is inside, then input and output are not same always. Input and output will be same if that input belongs to the range of that inverse corresponding inverse. Now how to write if x does not belongs to this range? স্যার স্যার একটা বলেন যে x যদি ওই রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে এটা ভ্যালিড হবে একটা বলেন যে স্যার ফর অল x বিলংস টু মানে সব ভ্যালুর জন্য হবে স্যার ওটা কি বললেন আমি বললাম যে আমি এটাকে x লিখতে পারি যদি এটা x বিলংয়ের হয় যদি x মানে এটা যদি এই রেঞ্জের মধ্যে না থাকে তাহলে আমি অন্য ভাবে লিখতে হবে the representation will be something different not x we can write sin inverse sin x equal to x only when x belongs to minus pi by 2 pi by 2 but if x lies outside this interval then output will be something different. Just say for example this example, in this example what was input was 2 pi by 3 but what is the output pi by 3. Definitely this input and output are not same. Okay, because as inverse function is outside, so whatever is the value of x the output will be always lies between minus pi by 2 pi by 2 but input may be anything. হ্যাঁ স্যার Okay. Okay, say suppose now if we want to write sine inverse of sine 3, how to write? 3 in terms of radian. Whatever I am writing, they are all in terms of radian, okay? Not in terms of degree. Sine inverse of sine 3. Now how to write? If we want to write sine inverse of sine 3, then how to write sine inverse of sine 3? Okay. So first, check whether 3 belongs to the range of sine inverse or not. 3 is greater than pi by 2, isn't it? Yes, sir. So it is outside the range of sine inverse. So we cannot write sine inverse sine 3 equal to 3. We cannot write this. This is wrong. We cannot write sine inverse sine 3 equal to 3. So how to write sine inverse of sine 3? Then I will correct example. Now sine 3. Now come to trigonometric equation. Now how can we write sine 3? We can write sine of this is pi minus 3 we can write. We can write sine 3 equal to sine 2 pi plus 3 we can write. We can write sine of minus pi minus 3 we can write. We can write sine of minus 2 pi plus 3 and so on. There will be infinite number of representation. Okay? Sine minus pi plus 3. Minus pi minus 3. For Yes, all multiple pi minus to be minus, na? Yes, Even multiple pi to be plus. Yes. So there will be infinite number of representation. Okay, now we have to check which representation satisfies the range of sine inverse. Check this one. This is pi minus 3. This representation will satisfy because pi minus 3 belongs to that lies between minus pi by 2 to pi by 2, isn't it? Eta. So we can write sine inverse of sine 3. We can write this can be this sine 3 can be written as sine inverse of sine pi minus 3. Now this pi minus 3 that belongs to the range of sine inverse. So now we can cancel out sine inverse and sine. So we can write this is equal to pi minus 3. Okay. So sine inverse of sine 3 will be pi minus 3 not 3. Another example is sine inverse of sine 2 pi by 3. pi minus 2 pi by 3 Exactly. You have to pi by 3 solution. This is sine inverse of sine theta. We can write sine pi minus 2 pi by 3. This pi minus 2 pi by 3 this belongs to the range of sine inverse. So now we can cancel out sine inverse and sine and we can write pi minus 2 pi by 3. And it is pi by 3. We are getting pi by 3. Okay. Now suppose if you want to write tan inverse of tan 3, how to write? স্যার এইটাকে তো আমরা মানে sin 3 টাকে তো আমরা pi by 60 করেও লিখতে পারি তাহলে তারপর ওটা 59 pi by 60 আসবে লাস্টে তাহলে সেটার ভ্যালু বার করলে 177 তাহলে ওরকম করে হবে না স্যার বললে কি বলছিস pi মানে? মানে 3 মানে sin 3 কে তো আমরা sin pi by 60 লিখতে পারি Sin pi by 60 কেন? তারপর না ওরকম করে আমি pi এর টার্মে আনতে চেষ্টা করছিলাম ফার্স্টে না pi means one number 3 point something. It has no relation এর তো কোনো রিলেশন নেই এর সাথে মানে ডিগ্রির সাথে কোনো রিলেশন নয় না এরকম
তুই 180 না স্যার আমি রেডিয়ানেই বলছি, রেডিয়ানেই বলছি। রেডিয়ান কি ठीक है বলছিস? देखिए सर मीडियम देखिए Sir, 3 degree equals pi by 60 This is radians. not 3 হ্যাঁ। degree না, this is not 3 degree. ও আচ্ছা আচ্ছা। আমি কি বললাম, whatever I am writing they are in terms of radian, not in terms of degree. Nothing is in terms of degree. If degree is written, then it will be written. If it is 3 degree, then there is no problem. 3 degree lies in the interval minus pi by 2 pi by 2, হ্যাঁ। because the minus 90 degree is 90 degree. হুম, হুম। So sin inverse of, যদি এরকম লিখি sin inverse of sin 3 degree, so this will be 3 degree. There is no problem, because range of sin inverse is minus 90 to 90 degree. But whatever I am writing, if nothing is given, they are in terms of radian only. Okay. ওকে। अच्छा बोलो tan inverse tan 3 क्या होगा? pi minus 3 minus 5 plus 3. Minus pi plus 3, because tan inverse tan 3 we can write this is tan of pi plus 3, tan of 2 pi plus 3, tan of minus pi plus 3, tan of minus 2 pi हाँ, sir. plus 3, and so on. हां सर We cannot write tan of pi minus 3. Tan of pi minus 3 is minus tan 3, not tan 3. हां सर ठीक है ना? तो tan pi minus 3 नहीं लिख सकते. Now check which representation lies in the interval minus pi to pi by 2. This one minus pi by 3 minus pi plus 3 minus pi plus 3. So this is equal to tan inverse of tan minus pi plus 3. So this will be minus pi plus 3. क्या बोला? सर उसको 3 माइनस 5 लिख दीजिए After our to yes. सर उसको 3 माइनस 5 लिख दीजिए 3 minus pi ऊपर वाले को इसको हां सर 3 minus pi. हाँ सर। हाँ 3 minus pi ये तो एक ही है ना, minus pi plus 3 और 3 minus pi दोनों सेम ही है. तो 3 minus pi ये बोल रहे हो ना, 3 minus pi और minus pi plus 3 तो एक ही है, सेम है तो. cos inverse cos 3 क्या होगा बोलो? सिर्फ देखिए cos inverse देखिए तो सर 3 होगा This will be only 3 because this 3 is less than pi. 3 is less than pi, so definitely cos inverse cos 3 equal to 3 we can write. सर बोल. सर क्वेश्चन तो सर गलत ही नहीं है सर यहां पे देखिए cos inverse वो अच्छा ज्यादा नहीं इनवर्स ले ले, ठीक है ना, ये तो ये अनडिफाइंड तो क्या ये कैसे पॉसिबल है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो नहीं होगा. cos inverse cos 3 से है ना, इसमें किसी डाउट नहीं है ना. सर ये तो न्यूमेरिक टाइपिंग का कुछ लंबा थोड़ा देगा कैसे कि sin inverse cos inverse बहुत लंबा बना देगा क्वेश्चन कुछ क्रॉस में दे देगा मेरे को कि हाँ बोलो. ये न्यूमेरिक देगा मेरे को इंटीजर टाइप आंसर दे नहीं इंटीजर टाइप इस टाइप नहीं आता है. देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, कुछ देखो बोलो. sin inverse of sin 5, cos inverse of cos 5, cot inverse of cot 5, tan inverse of tan 5. Representation of sin inverse sin and cosec inverse cosec will be same. Representation of cos inverse cos and sec inverse sec will be same. Okay. अच्छा फिर ये लिखो sin inverse of sin 6, cos inverse of cos 6, tan inverse of tan 6, cot inverse of cot 6, sin inverse of sin 8, cos inverse of cos 8, sin cos tan. बोलो क्या होगा, फटाफट बोलो. pi minus 5 pi minus 5. होगा सर তো তারপর এটা 2 পাই মাইনাস 5 अच्छा pi minus 5 होगा. ना सर 2 pi plus 5 होगा. ना सर 2 pi plus 5 तो बहुत बड़ा हो जाएगा. 5 minus 2 pi. 5 minus 2 pi. 5 minus 2 pi, yes it will be 5 minus 2. sin 5 this is equal to sin, देखो ये pi minus 5 अगर तुम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, pi मतलब 3.1 और 3.14 और ये 5 तो that means 1 point कुछ 86 इस टाइप कुछ आ जाएगा. 1.86 is greater than pi by 2. तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे sin of definitely 2 pi plus 5 अगर प्लस पे आएगा तो ये तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा. we can write sin of minus pi ये भी तो ऑलरेडी नेगेटिव साइड में बड़ा होगा. जैसे sin of minus 2 pi plus 5 ये देखो ये 6.2 minus 6.2 और ये 5 तो ये हो जाएगा कुछ minus 1 point something. So minus 1 point something that lies in the interval of sin inverse. इसको ऐसे लिखना है sin inverse of sin minus 2 pi plus 5. So this is equal to minus 2 pi plus 5. ठीक है. Sir, next second number 5 minus 5. 5 minus 5 देखो अच्छा एक बात हमेशा याद रखो, तुम जब भी ये cos इनवर्स ऑफ cos का जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है 2n pi प्लस और माइनस थीटा होता है ना. तो यहाँ पे हमेशा cos इनवर्स ऑफ cos 5 को तुम लिखने के लिए जाओगे तो हमेशा 2n pi प्लस और माइनस 5 के फॉर्म में ही आएगा. तुम tan इनवर्स tan 5 को लिखने के लिए जाओगे तो हमेशा n pi प्लस 5 के फॉर्म में ही आएगा. यहाँ प्लस 5 ही होगा, माइनस कभी नहीं हो सकता है. cos इनवर्स ऑफ cos 5 को तुम लिखोगे तो यहाँ पे n pi प्लस 5 के फॉर्म में ही आएगा, कभी भी यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी cos इनवर्स cos 5 को तुम लिखने के लिए जाओगे तो यहाँ पे हमेशा 2n pi के फॉर्म में आएगा, कभी भी और मल्टीप्लाई पाई नहीं आएगा. क्योंकि तुम्हें हमेशा तुम cos 5 को इन टर्म्स ऑफ cos लिख रहे हो तो cos का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2k pi प्लस और माइनस थीटा होता है ना. तो हमेशा 2k pi के फॉर्म में ही आएगा. सर 2 pi minus 5 हां बहुत बोल चीज 2 pi minus 2 pi minus 5 है. अच्छा 2 pi minus 5 it will be 2 pi minus 5 yes. ठीक है ना, हमेशा देखना कि जनरल सॉल्यूशन के टर्म ही आएगा. साइन के लिए भी वही है कि अगर यहाँ पे इवन मल्टीप्लाई पाई है तो यहाँ पे प्लस होगा ही होगा, अगर यहाँ पे ऑड मल्टीप्लाई पाई है तो यहाँ पे माइनस होगा ही होगा. सर cot it 5 minus 5 है. यस माइनस 5 प्लस 5. Sir, cot का डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकते, उसका तो रेंज r होता है. ये नंबर कॉट इनवर्स का रेंज देखो तुम, कॉट का रेंज नहीं ना, कॉट इनवर्स ये तो इनवर्स है, बाहर कौन है, बाहर इनवर्स है. तो यहाँ पे कुछ भी हो ये तो 0 से पाई के बाहर नहीं आ सकते ना. हाँ या सर. तो कॉट इनवर्स ऑफ कुछ लिखोगे, यहाँ पे कुछ कॉट इनवर्स कुछ रहेगा, कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग x को कुछ भी होने दो. यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये आउटपुट तो 0 से पाई के पीछे होगा. हाँ सर.
So tan inverse tan 5 minus 2 pi. So minus 2 pi plus 5. Yes, minus 2 pi plus 5. So 2 pi minus 6 next. 2 pi minus 6 ঠিক আছে 2 pi Minus 6. না 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 সাইনের সাথে কি বললাম যদি ইভেন মাল্টিপল Minus pi 2 pi plus 6. yes minus 2 pi plus 6 So তারপরটা 2 pi minus 6. next one will be yes 2 pi minus 6 Sir, tan এটা minus 2 pi plus 6. 6 minus 2 pi. ঠিক So cot এটা 6 minus pi. 6 minus pi sir. Sin এটা 3 pi minus 8. 3 pi minus 8. এটা 8 minus 2 pi. 8 minus 2 pi না minus 2 pi plus 8 ঠিক আছে 3 pi minus 8. 3 pi minus 8 tan এর জন্য কি বললাম যে প্লাস হবে সব সময় ও হ্যাঁ সরি minus 3 pi plus 8. হ্যাঁ স্যার minus 3. Minus 2 pi plus 8. tell me first if there is any doubt any confusion any of this बोलो किसी का कुछ भी डाउट है तो बोलो ये जो जितना भी है इसमें कोई किसी में डाउट है तो बोलो नहीं सर डाउट डाउट नहीं है ना बोलो सो नहीं सर. ओके अब देखो ग्राफ ड्रॉ करता हूं graph of y equal to sin inverse of sin x का ग्राफ है so first y equal to sin inverse of sin x this is equal to x और इसके लिए होता है minus pi by 2 less than equal to x less than equal to pi by 2 है ना if x lies in the range of sin inverse then input and output will be same अच्छा अब बोलो कि pi by 2 less than x less than equal to 3 pi by 2 if x lies in this interval तब जाके क्या होगा pi by 2 less than x less than 3 pi by 2 less than equal to 3 pi by 2 whatever 3 pi by 2 तो देखो माइनस एक्स कहां से कहां तक है माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 है ना तो पाई माइनस एक्स कहां से कहां तक है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तो ये पाई माइनस एक्स दिस बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स सो कैन वी राइट साइन ऑफ x दिस इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स हम लिख सकते हैं ना इसको इफ x लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई बाई 2 सॉरी इफ x लाइज बिटवीन पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 हाँ सर. हाँ सर सो इफ x लाइज बिटवीन पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 देन इट विल बी पाई माइनस x अच्छा 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 के बीच बोलो क्या होगा Minus 2 pi plus 6. माइनस 2 पाई प्लस x देखो सीक्वेंस मिल रहा है ना नेक्स्ट अगर तुम ये बोलो कि 5 पाई बाई 2 से लेके 7 पाई बाई 2 क्या होगा दिस विल बी 3 पाई माइनस x होगा है ना हाँ सर. फिर नेगेटिव साइड में तुम करोगे नेगेटिव साइड में मतलब ये अगर होगा कि माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस 3 पाई बाई 2 से लेके माइनस पाई बाई 2 2 pi plus 2 pi plus x हां 2 pi plus x माइनस पाई माइनस x होगा दैट हाँ सर इट विल बी माइनस पाई माइनस x ठीक है ना सर ये वाला बता दिया minus pi minus x x कहां से कहां तक है माइनस 3 पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तो माइनस x कहां से कहां तक है पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच तो बोथ साइड में माइनस पाई करो तो माइनस पाई माइनस x कहां से कहां तक है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक है ना ठीक है तो sin x वी कैन राइट sin ऑफ माइनस पाई माइनस x ओके अब लोग नेक्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा मतलब माइनस 5 पाई 3 पाई 2 से 2 के बीच में तो उसमें होता है 2 pi plus x 2 pi plus x good suppose this is pi by 2 this is 3 pi by 2 this is 5 pi by 2 this is 7 pi by 2 this is minus pi by 2 minus 3 pi by 2 अब देखो if x lies between minus pi by 2 to pi by 2 तो ग्राफ कैसे होगा y को टेक तो मींस minus pi by 2 से pi by 2 के बीच हमें ग्राफ क्या ड्रॉ करना है ये वाला ग्राफ होगा सिर्फ दिस वन ओके अब देखो if x lies between pi by 2 दैट मींस ये इंटरवल में pi by 2 to 3 pi by 2 ये इंटरवल में ग्राफ क्या दे रहा है y equal to pi minus x तो दैट मींस एक्चुअली क्या x plus y this is equal to pi है ना x plus y equal to pi क्या होगा x इंटरसेप्ट pi y इंटरसेप्ट pi तो दिस इज pi इस टाइप का कुछ होगा this is y equal to x line this is y equal to pi minus x line है ना सेकंड वाला क्लियर है in between pi by 2 3 pi by 2 Yes sir. third that if 3 pi by 2 to pi 5 pi by 2 in that case y equal to minus 2 pi plus x so that means x minus y this is equal to 2 pi so our x intercept positive y intercept negative so it will be like this similarly next interval it will be this and देखिए बस हमारे को वहां पे this is minus pi अच्छा तो y equal to pi minus x this will be y equal to minus 2 pi plus x this will be y equal to 3 pi minus x okay
স্যার হুম। স্যার এগুলো পরপর কিভাবে বের করলেন প্রথমে একটা সেকেন্ডে বুঝছি তারপরগুলো মানে স্যার y টু যেটা ভ্যালু বের করছেন যেগুলো এইটা হ্যাঁ স্যার এগুলো सर तो इधर जो लेफ्ट में किया है सर -5 से -5 माइनस नहीं है सर हाँ वही मैं बोलना चाह रहा था, रुको एक मिनट, मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। देख এইটা বলছিস তো, if x lies between 3 pi by 2 to 5 pi by 2 है ना, হ্যাঁ স্যার তাহলে তুই দেখ -2 pi, দেখ কোথায় কোথায় 3 pi by 2 to 5 pi by 2, so 3 pi by 2 less than x less than 5 pi by 2, তাহলে -2 pi যদি করিস -2 pi plus x, এটা কার থেকে কানা যাচ্ছে -2 pi, so this will be -pi by 2 minus pi by 2 কানা যাচ্ছে। আচ্ছা তো so -2 pi plus x, that lies in the range of sin inverse, now can we write sin of x equal to sin -2 pi plus হ্যাঁ x হ্যাঁ স্যার বুঝছি and so on, ঠিক আছে, এরকম ভাবে করছি। আচ্ছা বুঝছি এবারে তুই দেখ আমরা আগে কি করেছি, দেখ sin ইনভার্স sin 5 করেছি, sin ইনভার্স sin 6 করেছি, sin ইনভার্স sin 8 করেছি, দেখি এটা আছে নাকি ওর মধ্যে। sin ইনভার্স sin 5 আগে দেখ, 5 কোথায় আছে, somewhere here, তাই না, এখানে কত 5 আছে, 5 is greater than 3 pi by 2, এখানে 5 আছে, so when x equal to 5, তাহলে আমরা কোন গ্রাফের উপর আছে, কোন লাইনের উপর আছে, এই লাইনটা, so in that case sin inverse sin 5, sin inverse sin x is -2 pi plus x, so what is the value of sin inverse of sin 5 here, so 5 কোথায় আছে, this line, on this line, so what is the equation of this line, -2 pi plus x, so this is equal to -2 pi plus 5, sin inverse sin 6 is less than 2 pi, এখানে আছে same, so it is also -2 pi plus 6, 8 কোথায় থাকবে, this is 2 pi, this is 3 pi, 3 pi means 9 point something, so this is 8, so what will be the value of sin inverse sin 8, 3 pi minus 8. 3 pi minus 8, so 8 আমার এখানে আছে, so sin inverse of sin 8, this is equal to 3 pi minus 8, like sin inverse of sin minus 3, this is minus pi, so this will be -3 somewhere here, this is -3, so what will be the equation of this line, Minus pi minus 3. y equal to কত আছে, y equal to 2 pi plus x, right? This line will be y equal to 2 pi plus x, that x intercept negative, y intercept positive, আচ্ছা actually that তাই তো, x by minus pi plus y by কত আসবে এটা, এদিকটাতে আছে x intercept negative, y intercept negative, this is minus pi equal to 1, তাহলে এটা কত আসছে, x plus y, না এখানে কি আছে, ভুল লিখেছি নাকি, Sir, minus pi minus x. Minus pi minus 6. আচ্ছা সরি minus pi তো চলছে, এটা minus pi minus x আছে, so this is minus pi minus x, so এখানে যদি -3 যদি পুট করে তাহলে কি আসবে, so put x equal to -3 in this equation, so if you put x equal to -3 কত আসবে, minus pi plus 3 চলে আসবে, তাই তো, so this is equal to minus pi plus 3, so we can find these values from the graph also. Is the graph clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Next slide. স্যার একবার লাস্ট টাইম Okay. হ্যাঁ স্যার So y equal to cos inverse of cos x, this is equal to x, 0 less than equal to x less than equal to pi. So if next interval, that means pi less than x less than equal to 2 pi, what will be the output? 2 pi minus x. 2 pi minus x, good, this is 2 pi minus x. So if 2 pi less than x less than equal to 3 pi, 4 pi minus x. this is equal to 4 pi, Minus x. X minus 2 pi. x minus 2 pi, minus 2 pi plus x হবে, minus 2 pi plus x. Okay, next যদি আমি এরকম করি কি 3 pi less than x less than 4 pi, কি আসবে এটা, 4 pi 4 minus pi x. minus x. it will be 4 pi minus x, yes, and similarly next interval, that means 4 pi 2, this will be minus 4 pi 4 pi plus x. plus x, okay, and so on. Similarly negative side, if we take minus pi less than x less than 0, minus x. minus x, and so on, ঠিক আছে আমি করছি না, দেখ सर वो x greater than 3 pi less than equals to 4 pi वो वाला क्वेश्चन सर 3 pi से 4 pi, हाँ सर 3 pi less than x less than 4 pi, ठीक है, तो 3 if x lies between 3 pi to 4 pi, तो हम ये बोल सकते हैं -4 pi less than minus x less than minus 3 pi, तो 4 pi minus x क्या होगा, 0 से लेके pi तक होगा, ठीक है, हाँ सर say this is equal to pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi, this is 5 pi, and this is 6 pi, so on, this is minus pi, minus 2 pi, acha, now draw. If x lies between 0 to pi, this is y equal to x, y equal to x means this one, this is y equal to x. Now if x lies between pi to 2 pi, that means graph in this region, ये region में graph क्या होगा देखो, actually graph will be y equal to 2 pi minus x, that means x plus y, this is equal to 2 pi है ना, तो x intercept 2 pi, y intercept 2 pi, तो इस टाइप का कुछ होगा, ये this will be y equal to minus 2 pi plus x. Next interval देखो क्या है, next interval also x intercept 2 pi, y intercept minus 2 pi, तो इस टाइप का कुछ आएगा, so it will be like this, this is y equal to 2 pi, sorry minus, এটা ভুল লিখেছি, এটা হচ্ছে 2 pi minus x, and this will be 2 pi minus 2 pi plus x. Okay, similarly this will be equal to and so on. This will be y equal to 4 pi minus x, this will be y equal to
4 pi plus x. This will be y equal to 6 pi minus x, and so on. Similarly, this side it will be y equal to minus x. अच्छा ये वाला बोलो क्या होगा? -pi by 2 to 2 minus pi, -2 pi to minus pi. ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट नेगेटिव, that is x minus 2 pi plus y positive, that is y by 2 pi. This is equal to 1. So that means minus x plus y. This is equal to 2 pi. So y का वैल्यू क्या होगा? 2 pi plus x होगा ना. तो ये हो जाएगा y equal to 2 pi plus x. ठीक है? Therefore, the graph of y equal to cos inverse cos x is always above y equal to x. हमेशा देखो y equal to, sorry, x axis always y equal to 0 lies above y equal to 0. हमेशा x axis ऊपर ही रहेगा ना. हाँ सर. अब बोलो ये जो पहले क्या था, cos inverse of cos 5, cos inverse of cos 8, cos inverse of cos 10, cos inverse of cos 12, ये सब क्या होगा? Cos inverse of cos 5 मतलब यहाँ पे है ना, 5 এখানে কোথাও থাকবে. So cos inverse of cos 5 কত আসবে? On this line. So it will be 2 pi minus 5. Cos inverse of cos 8 means it is less than this. So this will be 8 somewhere here. This is 8. তাহলে cos inverse of cos 8 কত আসবে? minus 2 pi plus 8. अच्छा, cos inverse of cos 10 is greater than 3 pi. that means यहाँ पे देखो. This is suppose 10. तो अगर ये 10 होगा तो cos inverse cos 10 क्या होगा? 4 pi minus 10. 12 कहाँ पे होगा? यहाँ पे suppose कहीं पे 12 होगा. This is 12. 12 में सेम होगा. That is 4 pi minus 10 minus 12. ठीक है ना? Suppose cos inverse of cos of minus 6. Cos of minus 6 क्या होगा? Minus 6 कहाँ पे? minus 6 होगी minus 2 पे, so this will be minus 6. So it will be 2 pi minus of 6. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. हाँ सर. Tan inverse of tan x. So y equal to tan inverse of tan x. This is equal to x minus pi by 2 less than x less than pi by 2. Next interval बोलो क्या होगा? If x lies between pi by 2 less than x less than 3 pi by 2. This will be minus pi plus x है ना? Next interval में क्या होगा बोलो तो 3 pi by 2 से 5 pi by 2. minus 2 pi plus x. Yes, minus 2 pi plus x. And similarly, next interval will be minus 3 pi plus x, so minus 3 pi plus x. If 5 pi by 2 less than x less than 7 pi by 2, and so on. In negative side also, if we take minus 3 pi by 2 less than x less than minus pi by 2, यहाँ पे क्या होगा? Pi plus x हो जाएगा, उल्टा होता रहेगा. This is equal to next interval will be 2 pi plus x कौन? If minus 5 pi by 2 less than x less than 3 pi by 2. So this is equal to সাইনের মতো হবে না? না সাইনের মতো হবে না এটা. Minus pi by 2. This is pi by 2. This is 3 pi by 2. এটা হচ্ছে pi. আচ্ছা 5 pi by 2. This is 2 pi. Minus 3 pi by 2. This is minus pi. That if x lies between minus pi to pi by 2, it is y equal to x simply. This one. Next, in this interval, pi by 2 to 3 pi by 2, this is y equal to minus pi plus x. That means what? That means x minus y. This is equal to pi. Then is x intercept positive, y intercept negative. Then is this type. It will be like this. Yes, sir. This graph will be discontinuous. Yes. Similarly, এরকম type এর হবে. Okay. This will be the graph of tan inverse of tan x. This is y equal to minus pi plus x. This is equal to y equal to minus 2 pi plus x. Y equal to pi plus x, and so on. Done? Yes, sir. Done. Y equal to cot inverse of আগের পেজে নিয়ে যাবি? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। the cot inverse of cot x. This is equal to x 0 less than x less than pi. This is equal to a pi to 2 pi. কি লিখবো? It is minus pi plus x. Okay. This is equal to f 2 pi to 3 pi Minus 2 pi plus x. minus 2 pi plus x. This is equal to minus 3 pi plus x if 3 pi less than x less than 4 pi, and so on. Graph common as well. This is pi. This is 2 pi, 3 pi. So that graph first graph will be like this. Y equal to x. Second graph, x intercept positive, y intercept negative. So this type. Okay. Next. So this type of graph. Y equal to minus 2 pi plus x, y equal to minus 3 pi plus x, and so on. So again, this graph will lie above x axis.
Yes, sir. Next, y equal to cosec inverse of cosec x. Okay, it will be same as sin inverse of sin x. Exactly same as sin inverse sin x. There is a minor difference. Sin inverse of sin x, graph of sin inverse of sin x is like this. So this is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is minus pi. Now cosec inverse of cosec x, undefined. Cosec undefined for which values of x? Multiple of pi, so 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, minus pi. So these points, so it will be like this. So at this point there will be a gap. Except everywhere it will be same as exactly same as sin inverse sin x. Okay. And similarly for sec inverse sec x, it will be exactly same as cos inverse of cos x, except or multiples of pi by 2. Okay. Okay, sir. Next, sin inverse of minus x. This is equal to minus sin inverse of x. Definitely x belongs to minus 1 to 1. Otherwise it will be undefined. Cos inverse of minus x. This is equal to pi minus cos inverse of x. Okay. X belongs to minus 1 to 1. Tan inverse of minus x. This is equal to minus of tan inverse of x. X belongs to r. Cot inverse of minus x. This is equal to pi minus cot inverse of x. X belongs to r. Sec inverse of minus x. This is equal to pi minus sec inverse of x. X belongs to r minus 1 comma 1. Cosec inverse of minus x. This is equal to minus of cosec inverse of x. X belongs to r minus of minus 1 comma 1. Okay. That. The sin inverse of minus x. Okay. First let us solve this one. How to do? Let sin inverse of minus x. This is equal to theta. Now, as theta is the output of sin inverse, what is the range of theta? We can write minus pi by 2 less than equal to theta less than equal to pi by 2. So now we can write minus of x. This is equal to sin of theta. So that means x equal to minus of sin theta. Now we have to write minus sin theta in terms of different form. So this is x equal to, we can write sin of minus theta. Now if theta lies in the interval minus pi to pi by 2, minus theta কাটতে কারণে থাকবে. Now minus pi by 2 less than equal to theta less than equal to pi by 2. So minus theta lies in the interval, which interval? Same interval, isn't it? Yes, Minus sir. pi by 2 to pi by 2. So that means if theta lies in the interval minus pi by 2 to pi by 2, that means range of sin inverse. Minus theta also lies in the range of sin inverse. So now we can take inverse both sides. So we can write sin inverse of x. This is equal to minus of theta. So that is minus of sin inverse of x. This is equal to theta, and theta is sin inverse of minus of x. Similarly, there for cos, let cos inverse of cos inverse of minus x. This is equal to theta. So if cos inverse of minus x is theta, then 0 less than equal to theta less than equal to pi. So you get minus x. This is equal to cos theta. So that means x equal to minus of cos theta. Okay. Now can we write minus of cos theta equal to cos of minus theta? No, sir. No. So we have to write cos theta in different representation. So now say cos of minus theta, we can write this is cos of pi minus theta. Okay. Now if theta lies in the interval 0 to pi, then our minus pi minus theta কাটতে কারণে থাকবে Same interval. same interval. As 0 less than equal to theta less than equal to pi, that means minus theta lies between minus pi less than equal to theta less than equal to 0. That means pi minus theta lies in the interval 0 to pi. So 0 less than equal to pi minus theta less than equal to pi. Okay, so that means this lies in the range of cos inverse. So now we can take cos inverse both sides. So it will be cos inverse of x. This is equal to pi minus theta. So pi minus theta is pi minus cos inverse of minus of x. So cos inverse of minus of x. This is equal to pi minus cos inverse of x. And so on. All of this will be same process. For minus of theta, it will be sin, tan, and cosec will be just like sin, and cos, cot, sec that will be same like cos. सर सर यहाँ पे प्रूफ करते समय एज्यूम किया है कि थीटा पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 का रेंज थीटा पाई बाय 2 से नहीं है, प्रूव करने के लिए एज्यूम नहीं किया. sin inverse को आउटपुट है. sin inverse का आउटपुट तो होना ही है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में. हाँ सर. वो एज्यूम नहीं किया भाई, डेफिनेशन ट्रू है. ओ ठीक है सर. क्योंकि थीटा इज आउटपुट ऑफ sin inverse x. So definitely theta lies in this interval minus pi to pi by 2 के बीच में रहेगा ना. हाँ सर. Is it done? Yes, sir. Next leg. Sin inverse of x. This is also property. Sin inverse of x. This is equal to cosec inverse 1 by x. Okay. X belongs to definitely minus 1 to 1 except 0. Cos inverse of x. This is equal to sec inverse of 1 by x. X belongs to minus 1 to 1 except 0. Next. Tan inverse of x. This is equal to cot inverse 1 by x.
for x greater than 0. Okay, if x greater than 0, then only it will happen. If x less than 0, then what will happen? It will be minus pi plus cot inverse 1 by x if x less than 0. अच्छा, I think sin inverse, cos inverse, sin inverse and cos inverse, there is no problem, right? देखो यहाँ दिक्कत क्यों हो रहा है? If x is positive, sin के लिए बोला मैं, if x is positive, then sin inverse x and cosec inverse 1 by x both lies in the first quadrant, because वो angle जो होगा that will be lies between 0 to pi by 2. If x is negative, cosec inverse they will lie भी सेम है. सिमिलरली cos इनवर्स अगर x पॉजिटिव है तो sec cos दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आउटपुट होगा. sec का भी आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, cos का भी आउटपुट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. If x is negative, then both for cos and sec have output in the second quadrant. But tan और cot के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है? tan और cot के लिए जो रेंज है, रेंज सेम नहीं है ना. tan के लिए रेंज है -5 to pi by 2 और cot के लिए रेंज है 0 to pi. तो if both are positive, then there is no problem. If x is positive, तो tan inverse भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा, tan inverse फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, cot inverse 1 by x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा. If x is negative, x negative के लिए tan inverse हाफ एंगल होगा, tan inverse x हाफ एंगल होगा. बोलो, if x is negative तो tan inverse x, suppose x equal to 1 by -1, तो tan inverse x, tan inverse -1 का वैल्यू क्या होगा? minus pi by 4. -pi by 4, सही है. So it will be angle in fourth quadrant. But if x is negative, then cot inverse x कहाँ का एंगल होगा? Second quadrant, because cot का जो रेंज है that is 0 to pi. So that's why for tan inverse there is a problem. For tan inverse x, it is cot inverse 1 by x if x is positive. Okay, if x positive, then there is no problem. If x is negative, the left side is angle of fourth quadrant, and cot inverse 1 by x, this is the angle. Cot inverse 1 by x is the angle in second quadrant. So we have to take that angle in fourth quadrant. So what we have to do? We have to minus pi with it. मैं theoretical कर रहा हूँ, पहले ये बोलिए concept समझ में आया? Is the concept clear? हाँ सर. Yes, sir. Sin inverse, cos inverse, इन दोनों में I think there will be no doubt. Cot inverse positive के लिए भी I think there will be no doubt. क्योंकि हम लिख सकते हैं tan inverse √3, this is equal to nothing but cot inverse of 1 by √3, है ना? लिख सकते हैं because this is pi by 3, this is also pi by 3, no problem. यहाँ पे देखो tan inverse अगर -1 होगा, tan inverse of -1 और इधर cot inverse of -1, tan inverse -1 का वैल्यू क्या है? -pi by 4 है और यहाँ पे ये 3 pi by 4 होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा 3 pi by 4. तो ये -pi by 4 है, ये 3 pi by 4 है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना है तुम्हें? -pi करना है ना? Yes, sir. हाँ sir. আচ্ছা, আমি প্রুফটা করে দিচ্ছি, দেখ থিওরিটিক্যাল প্রুফ যেটা. Let x less than 0 and tan inverse of x that lies in the interval tan inverse of x equal to theta. So what will be the range of theta? अगर x 0 less than 0 होगा तो theta का रेंज क्या होगा? Minus pi by 2. minus pi by 2 मैंने 5 से 0. Good, less than 0, ठीक है ना? So now अब देखो, this is equal to tan inverse of this equal to theta. तो यहाँ पे तुम्हें this is equal to theta, that means we can write theta equal to tan, sorry, x equal to tan theta, ठीक है? So what will be cot of x? So cot theta, this is equal to 1 by x है ना? Cot theta equal to 1 by x होगा. Yes, Now ये theta -pi by 2 से pi by 2 के बीच में, minus pi by 2 से 0 के बीच में है, but it doesn't belong to range of cot inverse. तो तुम्हें इसको cot inverse के रेंज में लेके जाना है, 0 to pi के बीच में लेके जाना है. तो क्या करना है इसको? प्लस 5. Plus pi. So now pi plus theta, अगर तुम इसको plus pi कर देते हो, so that means now minus pi by 2, that is less than theta less than 0. So that means we can write pi by 2 less than pi plus theta, that is less than pi. So if we add pi, it will be in range of cot inverse. So cot theta, can we write cot theta equal to cot of pi plus theta? We can write this is equal to 1 by x. Now this pi plus theta, as pi plus theta belongs to the range of cot inverse, we can take inverse both sides. So it will be pi plus theta, this is equal to cot inverse 1 by x. Theta की छिलो, so this is pi plus tan inverse of x, this is equal to cot inverse 1 by x. Okay, so that means tan inverse of x, this is equal to minus pi plus cot inverse 1 by x. স্যার স্যার কটের রেঞ্জ তো 0 থেকে পাই ছিল, তো তাহলে আমরা পাই বাই 2 অ্যাড করলেও তো তার মধ্যে কাজ করবে। কিন্তু pi by 2 অ্যাড করলে তুই cot pi by 2 plus theta কে তুই cot theta লিখতে পারিস? না আমরা cot theta লিখতে যাচ্ছি, তাই না? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। Done? Yes, sir. Done. এক মিনিট স্যার। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। Next step. Sin inverse x plus cos inverse of x, this is equal to pi by 2. Tan inverse of x plus cot inverse of x, this is equal to pi by 2. Sec inverse of x plus cosec inverse of x, this is equal to pi by 2. Okay. Sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2. Tan inverse of x plus cot inverse of x equal to pi by 2. Sec inverse x, cosec inverse x equal to pi by 2. For all x belongs to -1 to 1. For all x belongs to r. For all x belongs to r minus -1 to 1. First এটা প্রুফ করি, সবগুলো একই আছে। Let theta equal to sin inverse of x. So as theta equal to sin inverse of x, theta will lie in the interval -pi by 2 to pi by 2. So minus pi by 2 less than equal to theta less than equal to pi by 2. Okay. So this is x equal to sin theta. Now
from sin inverse, because x is theta is sin inverse, so from sin inverse we have to convert in terms of cos inverse. Okay, so this is sin theta, so we have to convert this sin theta in terms of cos theta. Now say, can I write this is sin theta, this is equal to cos of pi by 2 minus theta. If we want to write sin in terms of cos pi by 2 minus theta, can I write it? Yes, sir. Yes, sir. Now say what is the range of pi by 2 minus theta? So theta as minus pi by 2 less than equal to theta less than equal to pi by 2. So that means we can write minus theta also lies in the same interval, that is minus pi by 2 less than equal to minus theta less than equal to pi by 2. So if we add pi, it will be 0 less than equal to pi by 2 minus theta, that is less than equal to pi. That means this one pi by 2 minus theta, that lies in the range of cos inverse. So we can take inverse both sides. So it will be cos inverse of x, this is equal to pi by 2 minus theta. So this is cos inverse of x equal to pi by 2 minus theta is what? Theta is sin inverse x. Sin inverse of x. So this is cos inverse of x plus sin inverse of x. This is equal to pi by 2. Okay. And similarly, we can put the other also. All will be same thing. Same approach, same. এটা প্রুফ গুলো ইম্পর্টেন্ট। দেখ প্রুফের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্ট থাকে, প্রুফ অত বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু আমরা যখন ইনভার্সের কোশ্চেন করব দেখবে এগুলোই কাজে লাগবে। সবসময় আমরা কি করতে হবে, we have to keep that angle in the range of that particular inverse function. Okay, we have to always do that operation only. ঠিক। সবসময় আমাকে ওই রেঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে অ্যাঙ্গেলটাকে বারবার। अच्छा मैं वीकडेज में एक्स्ट्रा क्लास बुला सकता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक। सर टाइमिंग Timing. टाइमिंग आफ्टर 3:30